Assalamu alaikum everyone. I'm Faneez. I'm a graphic designer and an animator. I did my bachelor's from ComSets in visual communication design, and I graduated in COVID era, which was 2020 December. Uh, I grew up watching Star Wars. I was the kid who used to get bullied because of my name and what it meant. Obviously, I'm not going to say it out loud. But so eventually, I became a Darth Vader fan, and you may have seen my name on the Creative Mornings captions as Bro Vader. So Vader comes from Darth Vader, and Bro, I don't know, came from somewhere. I also follow DC and Marvel. I've been following DC from comic era and Marvel when Iron Man first came out. I also watch many sports, including football. I'm a United fan. I follow Ferrari in Formula One, and I also play table tennis in my free time, and I also follow tennis and cricket as well. Uh, Given my passion for technology, I basically I'm always up for watching new technology that came out, whether it's a phone or a laptop or any computer accessory. Um, and other than that, I also play Valorant. If anyone knows what it is, it's basically a CS:GO 2.0, but with a fancy. So play somewhat professionally. I've coached 4 teams as well, and that's about me. Uh, yes, yes, sure. So I've managed my own team. Other than that, I've matched Renegades. It's a low-key sort of a club in Fast. Basically, there's a team in Nust which played Jazba Cup. It happened, I think, in 2020. It was named as the Crosshairs. It I think it was 2020 2021. Yes, yes, sure. What are your thoughts on Star Wars Episode 7, 8, and 9? The prequels are better. uh, I think because now it's fancy VFX हर जगह, मार्वल में भी DC में भी, तो अब बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इट्स टू मच. पहले हम देखते थे ना कि how they used to expose films and make the lightsaber and the miniatures. Up it's all too fancy everywhere. Yeah, CGI. So seventh was better as compared to 8th and ninth, and Rogue One was better. But prequels are of course better. Other than that, I also like to collect songs as a hobby, as you can see, if anyone can see. Yeah. Uh, so now let's talk about Re-emergence. Re-emergence was my thesis project based on the language of dreams. Um, why dreams? Because dreams are very close to me. I used to have nightmares ever since I was a kid, and I also have experienced some sleep paralysis and sleepwalking as well. So this topic was very close to me. I wanted to understand why dreams occur and what is the meaning of a dream. It can be the most random thing, or it can be something you've seen in the day, or you've experienced it in the past, etc. So my thesis took place in 2020 when it was quarantine. I remember 17th March 2020 was the first day of quarantine in Pakistan, and I downloaded the 3D software. I work on Cinema 4D, and for the first time I was confused in my life कि ये मैंने क्या कर दिया, बिकॉज आई डेंट नो यूनिवर्सिटीज़ में स्किल्स सिखाते नहीं हैं जो आपको ज़रूरी चाहिए होती हैं, विच इज़ अप टू डेट. और आपको बेसिकली खुद ही मेहनत करनी पड़ती है कि आप उन स्किल्स को आगे इन्हेंस करें. सो आई ओपन यूट्यूब, आई पेड स्किल शेयर की क्लासें, एंड आई टुक देम, एंड डे बाय डे आई स्टार्टेड लर्निंग. Over, I think in June, my ENT doctor told me that I have tinnitus. अगर किसी को नहीं पता तो tinnitus is a sound
Mostly it's a buzzing sound that occurs in your ear for no reason. It happens for no reason. There's no symptom, there's no disease. It's just, it happens and you have to live with it. So it was hard for me because it was over the time it transitioned from summer to winters. एंड बिकॉज विंटर्स में कोई एक्सटर्नल साउंड नहीं है, पंखे की आवाज़ हो या एसी की आवाज़ हो, तो यू कैन स्टिल balance it out. So I used to be awake for, I think, all day, all night. I used to tire myself to sleep and keep doing my 3D work, and renders पे renders निकल रहे हैं, and I didn't understand कि tinnitus है क्या. Eventually, the doctors told me that make it a part of your life, think of it like a superpower. And I think December 2020 I made peace with it, and I just went on with it, and it's been 3.5 years almost now. So that was a very difficult transition for me. uh, so uh, a dream, basically, simple alfaz mein, a dream is a collection of thoughts that occur in your daily life. Simple as that. It has some different theories. फ्रॉइड की डिफरेंट थ्योरी थी, कार्ल जंग की डिफरेंट थ्योरी थी, मेंडलीफ की डिफरेंट थ्योरी थी, हर बंदे की डिफरेंट थ्योरी थी. बट एट द एंड ऑफ द डे अ ड्रीम अकर्स इन द सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर माइंड. वो इतना पावरफुल होता है कि एक नॉर्मल बंदा उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि यार अच्छा, मैं तो बहुत अजीब सा मुझे ख्वाब था. या कुछ लोग कहते हैं कि हम उठे तो हमें ख्वाब याद नहीं रहा. वो ख्वाब इसलिए नहीं याद रहा क्योंकि हर बंदे का दिमाग डिफरेंटली काम करता है. क्यों काम करता है? हर बंदे का स्ट्रेस लेवल और टेंशन लेवल फ़र्क है. सो दिमाग ऑटोमेटिकली आपको नहीं दिखाता ख्वाब, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एंड यू डोंट वांट अनदर थिंग अपने सर पे. मोस्टली लोग ड्रीम्स को डिसमिस कर देते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अ ड्रीम इज़ अ ड्रीम, और वो कहते हैं कि इट्स नॉट रियल. ऐसी बात नहीं है. आई एम श्योर आप सब में से भी किसी ने कहीं ना कहीं नाइटमेयर एक्सपीरियंस किया होगा, और वो ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप उठ के बैठे डर से. डर इज़ अ फीलिंग. अगर आपने फील किया है तो वो क्यों नहीं रियल हो सकता. दैट वाज माय आर्ग्यूमेंट जब मैंने अपनी जूरी में भी पेश किया था कि ड्रीम इज़ अ फीलिंग, उसकी रियलिटी फ़र्क है, आपकी फिजिकल लाइफ की रियलिटी फ़र्क. एंड देयर आर हिडन मैसेजेस ऑफ अ ड्रीम, जो कि एक दिमाग अगर उस पर फुली कॉन्सेंट्रेट करे तब भी उसको कुछ ना कुछ पार्ट जाके समझ आता है. सिगमंड फ्रॉइड कहता था कि ड्रीम का साइको एनालिसिस बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपने दिमाग को फुली अंडरस्टैंड करना है. इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं. पीरियोडिक टेबल वाज मेड थ्रू अ ड्रीम. एक दिन मेंडलीफ टायर्ड हिमसेल्फ टू स्लीप, एंड जब वो उठा तो उसने कहा कि मैंने अपने ख्वाब में देखा कि सारे एलिमेंट्स ना बारी बारी अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एक टेबल में फॉर्म कर रहे हैं. इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं. Salvador Dali was a very famous painter. He used to dream about his paintings, and then he used to paint what he saw. There was another doctor, medical doctor, Robert Mendes. He said that he discovered his breakthrough, medical breakthrough, through his dreams. So dreams work in different ways. It can be the most absurd thing you've ever seen, or it could be something you've experienced in the past or you've seen in your daily life the previous day. So it's not useless. So the word useless for a dream is very demeaning for me. So I basically made a short film on the language of dreams. The most common dreams a person can dream about is anything related to light, death, or self. Self is basically an expression of who you are as a personality. Death, when you see death, whether you're dying or someone close to you is dying, it means that something greater in your life is about to happen. And when you see light, it means you need guidance in your physical life. So my research was all scientific. I read the Islamic point of view as well, but it was mostly scientific. So my two main research points were Freud and Carl Jung. Yes.
it's a part of who you are. So it's not a fully part, but it's a part of who you are. There are many different theories. कुछ लोग कहते हैं कि आपने अगर देखा तो आप लोगों को इस तरह पोर्ट्रे होते हैं, इन जो लोग आपको देखते हैं ना इन डेली लाइफ, या जो आपको समझते हैं या जो आपके करीबी होते हैं, उनको आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. लेकिन मेनली बहुत सी ऐसी थ्योरीज हैं जो इस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती हैं कि आप बेसिकली एक पार्ट हैं जो आप अपने आप को अगर आप ख्वाब में देखते हैं इन एनी फॉर्म, सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर माइंड, इट्स नॉट फुली यू. Yes, you can say, yeah, to some point. Yeah. So it's a approximately 3-minute film. So I hope you enjoy. So this was Re-emergence. So as you saw, the first sequence was light, then death, then self, and where they all merge is called mergence. In dream, it means that when you understand your dream fully, it basically merges into one, whether you're having different parts of your dream or whether it was a whole. So what I tried to show, it was basically an abstract exploration. So what I tried to show that all the elements, the strand from the light, the flower from death, and the coins from self, they formed re-emergence. So that was the basically idea. Yeah. So the strands from light, the flowers from death, and the coins, the gold coins from self, they re-emerge as mergence. So what does that mean? That means
that when you understand your dream fully, whether it was in parts or whether it was a whole, so your brain, so the I think so my take that this is a brain, and the three elements are combining it to make your knowledge golden. So as you can see, the transition, it's a basic gray structure, but as soon as all three elements combine, it turns golden. So so yes, yes, so the coin, yes, yes, so the coin made it into the gold structure. Yeah, so that was my basically whole idea behind re-emergence. So these are some of the still visuals. These are the basically time per frame. So approximately 4 to 5 minutes per frame, and there were, I think, 5800 frames, mostly shot at 60 fps, but some where there intense slow motion, it was 120 fps. This is the scene breakdown of the death sequence. So there were four parts: wireframe, the material, the basic lighting, and then the color grading. So there were some additional material in terms of the promotional marketing. So I made posters of the film, uh, because thesis couldn't happen physically. There was no display. There was only online because of COVID. So I designed my own exhibition of if there was a display, how it would look like. So this is light, death, self, emergence. You can follow Instagram for more. If there are any questions, I have a yes, question. yes. The reason we call it tetany. Uh, Calling it disease is technically wrong. It's more of a disorder, you can say. It's tinnitus. Yes, लेकिन tinnitus. इसका कोई ओरिजिन भी तो होगा ना कि ब्रेन से शुरू हो रहा है या सो इसका ओरिजिन दो ऑर्गन्स होता है, आपका ब्रेन और आपका ईयर. सो जो ईयर की वेन दिमाग से कनेक्ट हो रही है, उसमें द ब्रेन इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड फॉर नो रीज़न. इसकी कोई टेक्निकल कॉज नहीं है. ना इसको कोई डॉक्टर उस तरह से बता सके कि ये क्यों होता still being understood? है. यस, It's still being understood. यस. क्योर ढूंढना, आई थिंक 20 साल पहले जब किसी को कैंसर या टीबी होता था, तो देर वॉज नो क्योर. ओवर द टाइम आपको पता चला कि वो अच्छा कीमोथेरेपी है. देर आर मैनी अदर थिंग्स दैट कुड क्योर इट. इस तरह की मेडिसिन भी आ गई हैं, स्पेशली डिज़ाइन फॉर कैंसर और टीबी. तो इसका क्योर ढूंढा जा रहा है ऑफ कोर्स, बट अभी आपके दिमाग में, मतलब अगर आपका एमआरआई होता ना, सो देयर इज अ स्पॉट, इतना सा स्पॉट है वाइट, जो इंडिकेट करता है कि अच्छा इसकी ये इंडिकेशन है, दिस इज प्रूफ कि आपको टेनिटस है. बट वो क्यों है, ये किसी को नहीं पता. इसकी हार्वर्ड की मेडिकल आप जो लैब्स हैं, उन्होंने किया. पूरी दुनिया के फेमस फेमस डॉक्टर्स ने इस पे रिसर्च की, इसको समझने की कोशिश की, बट आखिर में सब यही कहते हैं कि मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो इट्स नॉट क्योरेबल एज ऑफ नाउ. Yes, after a lot of bad days and nights, yes.
I made peace with it. So even I'm talking, I can hear the sound right now. So it's 24/7. So इसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं डाइट में या रूटीन में जो इसको एलिवेट करती हैं. सो नंबर वन इज़ सॉफ्ट ड्रिंक्स. 4 साल हो गए, मुझे याद भी नहीं है क्या जायका होता था, छोड़ दी. एनी सॉफ्ट ड्रिंक, पानी, H2O, और शुगर यू हैव टू कट इट डाउन. अगर आप दिन में एक कप चाय पीते हैं और उसमें 1 चम्मच डालते हैं तो उसको आधा कर दें. ब्राउन शुगर मेरे लिए एलिवेट करती थी. देयर इज़ अ टिनिटस ग्रुप जो जिधर बेसिकली डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ें इफेक्ट करती हैं. सो यस यस, हाँ, यस यस. सो स्ट्रेस और एंजाइटी बिगेस्ट वो हैं. वो फिर आपका टिनिटस पीक कर जाता है, और जब वो पीक करता है ना तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फेस है ना वो इट्स नम. सो इट यूजली स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. टिनिटस हमेशा लेफ्ट ईयर से फिर राइट ईयर में ट्रांजिशन होता है. कुछ लोगों को सिर्फ एक ही ईयर में होता है, दूसरे में नहीं होता है. इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन. तो कुछ चीज़ें इस तरह रूटीन में फिर बिकॉज अब जॉब करते हैं, डेस्क पे बैठते हैं, तो आपको हर 30 मिनट बाद 5 मिनट की ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है फॉर योर वेन्स, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़ जाए. इसके अलावा नॉर्थ आप बड़ा सोच समझ के जाते हैं, क्योंकि जितनी हाइट होगी उतनी एलिवेशन होगी, जितनी एलिवेशन होगी उतना टिनिटस पीक करेगा. इसके अलावा बस कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपने अप्लाई कर ली हैं मैंने अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप जॉब का काम कर रहे हो और नहीं हो रहा, कभी कभी पीक कर जाता है. सो उसके लिए यू हैव टू वो होता है, डिप्रेशन होता है, इरिटेशन होती है, क्योंकि फिजिकल दर्द हो, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है तो आई अप्लाई सम बाम टू इट और ईट अ मेडिसिन. बट जो दर्द आप देख नहीं सकते उसको अगला बंदा जो सुन रहा है वो समझ भी नहीं सकता. सो बहुत से आप किसी को बोलेंगे ना कि टिनिटस है, वो कहेगा यार क्या है, तो आप कहेंगे यार आवाज़ें आती हैं, द ब्रेन प्रोड्यूसेस, वो कहेंगे यार पागल हो. मैंने आई थिंक कोई 100-200 लोगों से ओवर द पास्ट 4 years जिनको पता चला था कि ओ आई हैव टिनिटस, सबका ये रिएक्शन था. और इट्स नॉर्मल, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते. हाँ, एम्पैथी हो जाए जनरली लोगों में तो बहुत अच्छी बात है, बट आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. एंड यू जस्ट कैरी ऑन. सो या that represents self, as in your different parts of. I told you ना that अगर आप अपने आपको ख्वाब में देख रहे हैं, so it's a part of your existence. So the different doors represent different parts of you. Yeah. How has understanding your subconscious self helped you? Like, Actually, the last sequence where they merge, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मर्ज कैसे होगा. मे बी मैं अपने ख्वाबों और उस चीज़ों में इतना घुस चुका था. तब मैं एक दिन 4 बजे मेरी आंख लगी और मैं 7 बजे उठा, तो मैंने जल्दी से ना, मैं क्या करता हूँ कि जो भी मुझे ख्वाब आता है ना मैं पेपर पे लिख लेता हूँ. हार्वर्ड की एक केस स्टडी है जिसमें उन्होंने 10 स्टूडेंट्स लिए थे, मेडिकल रिसर्चर. 10 स्टूडेंट्स लिए थे और उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि 5 को एक मेज दिया था कि आपने ना मेज से नेविगेट करना है, सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है. और 5 को बोला था कि यू कैन टेक नैप्स इन बिटवीन एज यू नेविगेट. सो इट वाज अ एक्सरसाइज ऑफ 6 to 7 hours. तो जिन्होंने बीच में नैप्स लिए ना, ब्रेक्स ली, उनका रिजल्ट एज कम्पेयर टू जिन जो जागे रहे 6 घंटे लगातार, 70% ऑफ द पीपल जिन्होंने नैप्स लिए और वो किया, वो जब उठे और उन्होंने वो मेज सॉल्व किया, सो दे सेड के हमें ख्वाब में समझ आई कि हमने कैसे नेविगेट करना है. सो जो बाकी 5 थे जिन्होंने नहीं जागे रहे, जो उनमें से सिर्फ एक ने आधा मेज कंप्लीट किया. सो इस तरह की बहुत सी डिफरेंट केस स्टडीज़ हैं पूरी दुनिया में कि आपका जो ख्वाब है
उसमें आपको बहुत सारे सोल्यूशंस मिलते हैं इन द मोस्ट रैंडम ऐसे आप मतलब कुछ भी देख सकते हैं, गाड़ी उड़ी होगी लेकिन उसका कोई ना कोई मतलब है। Yeah, so, Did it help you? Sorry. Did it help you understand yourself better? yes, it did. In many ways, I think tinnitus was the main part of it. Uh, yes, yes. So, sorry. What's the relation between tinnitus and dreams? There's no as such relation, but it was a problem for me. You तो understood yes, your dream. yes, so I understood it a little better कि असल में क्या हो रहा है, like ये चीज़ क्यों हो रही है. Why was it? So I basically connected dots one by one. So जब आप अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ना, whether it's stress or anxiety or any problem you're facing, so उस वक्त thesis was my main problem. It was the biggest problem because मेरे supervisor ने कोई मेरी help नहीं की because वहाँ पे वो समझ नहीं सकते कि वो कहते हैं ख्वाब पे क्यों करना है थीसिस, ये कौन सुनता है, किसी को वो मैटर नहीं करता उस तरह से. सो इट वाज द डिफिकल्ट ईयर और इसलिए tinnitus was the main enemy. Yeah, so that's how I started understanding it a little better. Have you